Good evening, everyone. The Indian Chamber of Commerce and Industry, Maharashtra Social Service Council welcomes you to the panel discussion, COVID-19 effect on persons with disabilities, need to build a disability inclusive to the pandemic. My name is Dr. Swati Gargal, and I'm here in the capacity of Vice President WICCI MSSC. I'm a medical doctor, anesthesiologist. Anesthesia is my profession, poetry is my passion, and gender sensitization is my mission. That's how I describe myself. WICCI MSSC is presided over by Advocate Sana Hakim, one of the co-founding partners of Posh at Work, and a litigation lawyer by profession. We are privileged to have an illustrious panel to celebrate the needs of persons with disabilities and the work done towards removing the barriers for their day-to-day life, needs, and special participation and achievement. Today, we will be highlighting initiatives, resources, and ideas to curb and mitigate the impact of COVID pandemic on the persons with disabilities. While we are heading towards what we are discussing today, we hope is the end of pandemic. Today, recently, WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan has said that COVID-19 in India may be entering some kind of stage of endemicity where there is low or moderate levels of transmission going on. Yet we have to be very careful and paying attention to all aspects of COVID. We cannot ignore it. I don't think many of us have paid heed to the hardships faced by differently challenged people during the pandemic. Despite all odds, these heroes rise like a phoenix. Our phenomenal performance at Paralympics this year and every year speaks volumes about the motivation, determination, and achievements of Indian team, overcoming the obstacles in infrastructure and lack of sensitization of common man towards their needs. In an attempt to highlight the challenges and learn from the awe-inspiring lives and achievements of few of these heroes and gain perspectives, our panelists today will bring forth the ground realities and their coping tactics. Today, as we are discussing impact of COVID on persons with disabilities, I need to mention one alarming piece of news that flashed on media today morning, and that is 14 out of 25 children of a government children's home in Ulhasnagar tested positive for COVID. They are admitted for observation, for treatment, and 4 out of these 14 are physically challenged, all between ages 12 and 18 years. This is indeed a high percentage of COVID positivity. 10 of their staff members yet await their reports to come. So such is the situation, and we all have to be careful. In India, out of the population of 140 crores, approximately 2.7% are persons with disabilities, of which 2.2 are in the rural areas and 0.8% are in the urban areas. So just imagine the kind of infrastructure and the revamping that we need for these 2.2% who reside in the rural areas. No doubt that legends like Stephen Hawking would continue to inspire us, and that the movie, The Theory of Everything, will carry his story for common man forever and remain in the archives. And one more person needs a mention here, and that is Nick Vujicic, founder of Life Without Limbs. He was born in 1982 with no limbs. He's currently giving motivational talks around the world, has written several books, and is regular on talk shows. Today's discussion will be co-moderated by our council members, Advocate Diksha Rai and Advocate Sana Sood. Diksha Rai is a litigation lawyer by profession and is master's in criminal law and criminology. She has conducted trials and argued matters across various trial and session courts in family and criminal law. Currently an associate with Posh at Work, she has been instrumental in advising clients across spectrums who have faced sexual harassment at the workplace. Advocate Sana Sood, she has a master's degree in human rights. She has worked with a plethora of national and international human rights organizations, including CEDAW, Committee of United Nations, Geneva, also with United Nations, HCR. She has worked with various vulnerable groups like refugees, migrant workers, and women facing gender-based violence. She has authored a chapter in the International Diplomatic Law published by Oxford University Press. Now, let me introduce our panelists. Although a brief introduction might not be able to do justice to these esteemed panelists, but just a humble attempt from all of us here.
We would like to now welcome Deputy Commissioner of Divyang Kalyan Commissionerate, Pune, Shri Sanjay Kadam. He has graced the office of District Social Welfare as District Social Welfare Officer in Pune, Raigad, Akola, Nanded, and Gadchiroli. He was also Deputy Commissioner, Caste Certificate Scrutiny Committee in Akola, Buldhana, and Washim. He has also been a research officer of Rajya Magas Varga Ayog. We welcome you, Shri Sanjay Kadam. I also take pleasure in introducing Mr. Kiran Bhavkar, Public Relations Officer, Bank of Baroda, a musician who has traveled around the world with his band, a scholar of Marathi literature, and a social worker as Secretary of Vision Insight Foundation, Dombivli. He works extensively for the visually challenged community. Born in Baramati in Pune district, in a farmer's family with limited resources, he was born with total blindness. Like Scott Hamilton said, the only disability in life is a bad attitude. Kiran overcame his disability by having a winner's attitude and has many accolades in the field of sports to his credit. He has won several awards in swimming. Black Roshni, Meri Awaaz Hi Meri Pehchan Hai, Rainbow Melody, and Eco Beats Orchestra are his music shows, where Mr. Kiran provides a platform for upcoming musicians. He has equipped himself with basics of computer and works as a single window operator at Bank of Baroda, Dombivli branch currently. Some initiatives of its Vision Insight Foundation, Dombivli, need a mention here. Foundation development of visually impaired persons, including those with late blindness, sourcing and providing audiobooks and audible devices to students and working professionals, mobility orientation, parental counseling, providing study material to students, and also personalized assistance on case-to-case basis. Kiranji, I wish you a great success ahead. We welcome you. Our next panelist is Ms. Diksha Dinde, a young social activist from Pune. It's Pune again. A recipient of National Youth Award 2016-17, Government of India, State Youth Award 2015-16, Government of Maharashtra, Young Achiever by Pune Municipal Corporation, Youngest Achiever of Nehru Yuva Kendra, Ministry of Youth and Sports, awarded as a social engineer at the hands of Honorable A.K. Singh, Governor of Andaman and Nicobar. So she's graced with so many awards. Diksha, we are proud of you. She's represented India at Asia Pacific Leaders Initiative at Malaysia and bagged the Best Delegate Award in 2017. She's selected for South Korea's Youth Exchange Program by Ministry of Youth Affairs and Sports by Government of India in 2018. In the very same year, she was selected as Indian delegate for the World Youth Forum in Egypt. She received fellowship from RI Korea to study inclusive and accessibility policies of South Korea in 2019. With so many feathers in her cap, she is founder of The Womanism and co-founder and chief editor at Ajinta, a web portal. She's presently running a green signal school for child beggars and underprivileged in Pune. She also advocated for the right of the people with disability and strives to make infrastructure accessible for them. She's doing an excellent job. There's a lot more to be said about all these panelists, but I have just picked up some part of it. I hope I'm doing some justice to their biodata, which has been provided to us. It's illustrious. I now take pride in introducing George Abraham, social entrepreneur, inspirational speaker, and a disability activist. Being visually impaired since the age of 10 due to a near-fatal attack of meningitis, but that did not demoralize him, rather gave him a flight to success against odds. Born in London, having done his schooling in Hubli in Karnataka and graduation in Delhi, St. Stephen's College, he started his career in advertising. He launched Cricket for the Blind in India in 1990 and set up the World Blind Cricket Council and also was elected as its founding chairman in 1996. The inaugural World Cup of Cricket for Blind at New Delhi in 1998 was his conception and organization
Kudos to his abilities and success. George set up SCORE Foundation and launched Project Ivy. It is a single-stop knowledge resource on living a life with blindness. Nazar Ka Nazariya was a 13-part TV serial conceived and produced by Mr. George in 2013. He is a Ashoka Fellow, something really to be proud of. He carried the Olympic torch at Atlanta in 1996. He was nominated as one of the Limca Book of Records people in the year 2007. We are proud of you, Mr. George. Sanskriti Award 1995 and C.F. Andrews Distinguished Alumnus Award 2015 by St. Stephen's College, grace his biodata, with which he travels worldwide sharing his life learnings. So we have Mr. George Abraham, who has also delivered 2 TEDx talks in 2011 and 17. And these are our great panelists, esteemed panelists whom we have today. Our keynote speaker today is Mr. Sanjay Kadam, the Deputy Commissioner for Divyang Kalyan, Commissioner of Divyang Kalyan. And with this, I hand over to co-moderators Diksha Rai and Sana Sood to proceed with the evening. A warm welcome to all of you once again. Thank you, Dr. Swati. And now we'll be introducing the keynote speaker. I'm Sana Sood, and we're going to start off with Mr. Sanjay Kadam, who's the Deputy Commissioner for Persons with Disability, and he has agreed to grace our panel discussion today. Whilst being bound by certain official protocol, he might not be able to stay for the entirety of this panel discussion. But Honorable Deputy Commissioner will apprise us of the nature, role, and function of the Commission and the varied steps taken by the Commission for the persons with disabilities. Welcome, sir. So you're on mute if you're saying something. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, can you tell us a little bit about the Commission for the Persons with Disability? What is the nature and the role and the function of a commission like this? And what activities do you take up? ये जो कमीशन है उसकी निर्मिति वो दिव्यांग जो पीपल है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनके लिए हुई है, स्पेशली डेडिकेटेड फॉर दीज पीपल्स, फॉर देयर वेलनेस एंड देयर वेलफेयर. हमारे जो दिव्यांग कल्याण कमिश्नरेट है उनकी तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक जिला समाज कल्याण अधिकारी काम करता है, जो पूरा जिले का रिप्रेजेंटेशन करता है. जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी स्कीम्स चल रही है दिव्यांग कल्याण के लिए वो उन्हीं के थ्रू चल रही है. हम ये सब कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और वो जो भी नई स्कीम हमको बनानी है तो हमारे यहाँ से हम तैयार करते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिले में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं. ये जो दिव्यांग कल्याण के लिए वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें बहुत एस्पेक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं. एक तो पहला एस्पेक्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए है कि हमारे यहाँ शिक्षा के लिए बहुत सारी सुविधाएं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दे दी है. उनमें कई हमारे यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल भी है दिव्यांग लोगों के लिए, और उसमें दिव्यांग लोगों के लिए वर्कशॉप भी है. जो जिनका एज 18 के अबव रहता है उनके लिए वर्कशॉप हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए हम रन करते हैं. उसके अलावा हम जो भी एनजीओ है उनके मार्फत से स्कूल चलाते हैं और वर्कशॉप भी चलाते हैं, जो उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको बहुत फायदा होता है. ये सब हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम रहता है वो हमारा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनसे मदद लेके हम ये सब करते हैं. उनकी सब सुविधाएं यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं.
जो भी अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो उनकी मदद से हम ये दिव्यांग लोगों के लिए अभी ये रन करते हैं शिक्षा की सुविधा। उनका जो करिकुलम रहता है वो हमारा रहता है, थोड़ा बहुत इसमें हम बदल कर देते हैं कि हमारा जो टीचिंग एड्स रहता है दिव्यांग लोगों के लिए वो जो थोड़ा सा अलग रहता है नॉर्मल स्टूडेंट्स के तुलना में, तो वो फैसिलिटी हम पूरे करते हैं। हमारे यहाँ हम स्पेशल टीचर्स अपॉइंट कर देते हैं इनके लिए, जो कि ये रेगुलर टीचर्स के अलावा उनके टीचिंग एड्स या टीचिंग का सिस्टम जो है, सिखाने का मेथड जो है वो थोड़ा अलग रहता है। अभी आपको सबको मालूम है कि टोटल अपने यहाँ 21 टाइप्स है डिसेबिलिटी के, तो उनके हिसाब से हमको हर एक स्टूडेंट्स का स्टडी टूल्स, स्टडी मटेरियल हमको तैयार करना पड़ता है। तो वो हम सब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनके मदद से हम करते हैं, क्योंकि बेसिकली दिव्यांग डिपार्टमेंट का एक मोटो है कि जो भी दिव्यांग लड़के हैं उनको पहला अर्ली इंटरवेंशन से उनको हम डिटेक्ट करते हैं। अभी हमने चालू किया है कि अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, इसमें 0 to 6 एज के जो लड़के हैं उनको हम, ये अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके यहाँ से वो उनकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर देते हैं 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, और उनको जो भी ये लगती है, सर्जरी लगती है या तो जो भी कुछ उपचार लगता है, जो भी कुछ थेरेपी लगती है, तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हम उनको वो देते हैं। और हमारा डीडीआरसी सेंटर भी हर डिस्ट्रिक्ट में, अभी 19 डिस्ट्रिक्ट पे हमारा डीडीआरसी सेंटर है, उसमें हम ये सब उनको काउंसलिंग या तो फिर थेरेपी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सब हमारा जो काम चलता है, तो गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उनकी मदद से हम ये काम करते हैं। और हमारा बेसिकली उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दिव्यांग लोगों के लिए या दिव्यांग बच्चों के लिए हो सकती है तो हम प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा हमारा जो है कि दो दिव्यांग स्टूडेंट्स के अलावा जो भी दिव्यांग लोग हैं तो उनके लिए भी हम स्कीम गवर्नमेंट चलाता है। वो उनके खुद के वो आत्मनिर्भर हो जाए, इसके लिए भी एक महामंडल है, दिव्यांग वित्त महामंडल कारपोरेशन है वो, तो वो उनके यहाँ से उनको ट्रेनिंग मिलता है या फिर उनको भी लोन प्रोवाइड भी करते हैं। फिर इसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद से एक स्कीम चलता है, सीड कैपिटल करके हमारा स्कीम है, उसमें भी उनको मदद हो जाती है। दूसरा एक बहुत अभी इम्पोर्टेंट रोल करते हैं कि हम जो अभी दिव्यांग लोगों के लिए ये सुगम्य भारत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, तो उनका भी काम करते हैं। अभी जो भी आपको दिव्यांग लोगों के लिए बैरियर फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, उसमें भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम करते हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट में जो भी उनको असुविधा होती है, यानी बस के लिए या फिर रेलवे के लिए या फिर जो भी गाड़ी है उसके लिए, तो उनको दिव्यांगों के लिए ये बैरियर फ्री होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। दूसरा है कि जो भी वेबसाइट है वो अभी सब वेबसाइट हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कर रहे हैं, जो हम उसको बोलते हैं कि वेबसाइट फैसिलिटेड फॉर ओनली दिव्यांग, यानी उनको जिनको अभी दिखता नहीं है, जो ब्लाइंड है, उनके लिए भी वो वेबसाइट में सुविधा है कि वो वेबसाइट सुन सकते हैं। उसमें ऐसे भी बैरियर फ्री वेबसाइट है, वो हम हर एक डिपार्टमेंट की कर रहे हैं अभी आईटी डिपार्टमेंट की मदद से। दूसरा जो है कि सुगम्य भारत, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी या तो फिर लोकल बॉडीज की रहेगी या स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी, तो वो बैरियर फ्री करने के लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं। और वो उसमें भी अभी समझो कि रैम नहीं है या फिर लिफ्ट नहीं है या ऐसे जो सुविधा है वो हम प्रोवाइड करते हैं, रिट्रोफिटिंग का काम करवा लेते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। तो ऐसा हर एक जो एस्पेक्ट है दिव्यांग लोगों के लिए, उनके लिए हम काम करते हैं। दूसरा एक दिव्यांग कल्याण कमिश्नर जो रहते हैं वो एक एक जुडिशियल पावर में काम करते हैं। उसमें जो भी ग्रीवरेंस आते हैं दिव्यांग लोगों के और उनको कोई किधर असुविधा होती है, कोई तकलीफ होती है, तो उसको वो सोल्व करने के लिए
वो हमारा दिव्यांग कमिश्नरेट काम करता है। इसके अलावा हमारे दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलती है, जैसे कि अभी जो भी मेंटली इल लोग रहते हैं और वो क्योर रहते हैं, फिर भी मेंटल हॉस्पिटल से उनको उनके फैमिली लेके नहीं जाते, तो उनके लिए भी हम अभी काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल उसमें हमारा कार्यक्रम चालू है कि जो भी लोग वहाँ है मेंटल हॉस्पिटल में, उनको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो वो भी एक हमारा काम है। सबसे चैलेंजिंग काम तो मेंटली जो इंटेलिजेंट सॉरी ये जो मेंटली डिसेबल्ड लोग रहते हैं, उनका ज्यादा चैलेंजिंग काम रहता है। उसमें भी हम एनजीओ की मदद से ज्यादा काम करते हैं। तो हर एक दिव्यांग लोगों के लिए नॉर्मल लोगन जैसा उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, यही हमारी कामना रहती है। इसलिए इसकी इधर से हम काम कर देते हैं। थैंक यू मैडम। Thank you, Sanjay ji. Diksha, you're speaking on mute. Sorry. Thank you, Sana. I don't think we could have had a better context setting than that, Dr. Swati and Mr. Sanjay Kadam. Thank you so much for that. At the outset, I would like to apologize if we have tried to make this discussion as accessible as possible, but I'm certain we have left out on certain aspects. Any concerns with regarding to that as and when raised, we will do the needful, whether it be transcription or anything else. Thank you for everybody who's there on the panel, who is present in the panel and who's watching us. Thank you for making this discussion a priority for today. I am Diksha Rai. I am one of the Dikshas in the panel, the other being Diksha Dinde, who is a young achiever and inspiration for many. So thank you for being a part of this discussion. I am a cisgendered Indian woman with a brown eyes and black hair. I go with the pronouns she and her, and I do not have a disability. But I've made a lot of mistakes when it comes to the aspect of disability and inclusivity. The aim of today's discussion is therefore to educate ourselves, sensitize ourselves to the inherent discriminatory attitudes that we have towards people with disability and sort of create an awareness around it. Going forward, it is extremely important that inclusivity is the core of everything, be it our policies, our infrastructure, and even our mindset. Before we do that, before we talk about the inclusive responses, we need to hear the experiences, the challenges that people go through on the day-to-day basis, understand things from their perspective. So on that note, I would ask Kiran ji. किरण जी, जैसे मैंने आपसे बात करके जाना है, 6 साल की उम्र से ही आपने इतना स्ट्रगल कर आप अब इस मुकाम पर पहुंचे हो। आप बैंक में काम करते हो, आपकी एक फैमिली है, आप म्यूजिशियन हो जो इंटरनेशनली या नेशनली जाकर अपना टैलेंट और म्यूजिक प्रमोट करते हो। आप एनजीओ के साथ काम करते हो जो एकदम ही ग्रास रूट लेवल पर काम करती है, केस टू केस बेसिस में काम करती है। तो ये सब जब कर रहे थे, तो अभी ये कोविड-19 जैसे महामारी जैसे ही आई है, इसके वजह से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? एक्चुअली गुड इवनिंग ऑल। जैसे मैडम ने पूछा है कि कोविड-19 में कितना किसको क्या प्रॉब्लम हो गया, सबको ही प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन जैसे हम सोचेंगे कि डिसेबिलिटी को लेकर अगर देखें तो बहुत जन है जो कि वर्किंग है, अपने रोज के ट्रेन का सफर करते हैं और सेम टाइम पे ट्रेन बंद हो गई और सब लोग को घर पे बैठना पड़ा। जिनका मतलब जाना पॉसिबल है वो लोग नजदीक वाले ब्रांच में काम करते थे। बाद में ये सर्कुलर जारी किया गया कि दे विल वर्क फ्रॉम होम। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वर्क फ्रॉम होम की उन्होंने फैसिलिटी दे दी, तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे तभी से। लेकिन बहुत जन ऐसे थे कि उनको वर्क फ्रॉम होम दिया नहीं गया और उनको कुछ इस प्रकार की सुविधा भी नहीं दी गई थी कि वो लोग को कुछ कंसेशन दिया जाए। जैसे ट्रेन शुरू हो गई तो उनको कान पे बुलाया गया और वो लोग को जाना पड़ा। जैसे
कोई हमारे फ्रेंड्स है रेलवे में काम करते हैं, कोई है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको तो मतलब जाना मतलब कुछ रास्ता नहीं था उनके पास, उनको जाना ही पड़ा। बाद में कई बार हम लोग सोचा कि इनको भी वर्क फ्रॉम होम देने की कोई अगर हमारे पास सिस्टम हो तो कुछ ऐसा करें, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसको बिना टच के अलावा पॉसिबल नहीं है। जैसे जर्नी करना है, ट्रेन में चढ़ना है, उतरना है, हर जगह पे हमको टच करके ही अंदर जाना है, या तो किसी की हेल्प लेने के टाइम पे किसी को पकड़ना है, वो टाइम पे कोई हेल्प करने के लिए अगर सामने नहीं है, या तो सारी जगह से असुविधा होती है, उस टाइम पे काम पे जाना बहुत ही मुश्किल था। बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मुंबई की तरफ ट्रैवल करते थे, एवरी डे उनको जाना पड़ता था, वो बहुत मुश्किल से गए, क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था तभी कि वो लोग को घर पे काम करने का मौका मिले। अभी मैं तो वर्क फ्रॉम होम हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो घर से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ होता है कि ब्लाइंड पर्सन के जो स्टार्टिंग का पढ़ाई मना बोलो, या तो हो सकता है उनका स्कूल का जो लाइफ होता है उसके बारे में सोचो, तो वो लोग को बहुत दिक्कत हो गई, ना वो स्कूल जा पाए, ना कुछ पढ़ पाए। जैसे ब्रेल होता है, बिना टच के अलावा हम उसको कुछ नहीं कर सकते, ना सीख सकते ना सिखा सकते। ऐसे कंडीशन में उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आगे तो इसके बारे में हम बोलेंगे। और जैसे फैमिली प्रॉब्लम अगर आप बोलेंगे कि अगर घर के बाहर ही नहीं जाना है, कोई एक पर्सन भी जाके अगर फैमिली के लिए कुछ करे, उस टाइम पे तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ब्लाइंड पर्सन है तो आगे हेल्प करने के लिए ना हाथ पकड़ने के लिए कोई है, तो दुकान से कुछ खरीदना है, लाना है, वो भी तो बहुत मुश्किल बनी थी। उसके लिए अलग अलग हमने तरीके ढूंढे थे, वैसा कुछ तरीका ढूंढ के हम अपना गुजारा किए। साथ ही साथ हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे कि कोविड-19 में उनके ऊपर असर हो गया, उनको एडमिट होना पड़ा। और ये अगर मैं आपको बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाओगे कि ऐसे कंडीशन में उनको कोई भी वहां पर हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम पे। अभी थोड़ा थोड़ा मान लो कि हम फ्री हो गए हैं, उस टाइम पे एक दूसरे को टच करना बिल्कुल मना था। हॉस्पिटल में भी कोई ऐसे फ्रेंड हमारे गए कि उनको सर्विस मिलना मुश्किल था, यानी कि उनको अगर उनके पलंग पे जाना है, बेड पे जाना है, तो भी हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था। उनके बाजू में कहीं जगह पे दूरी पे खाना रखा गया है, वो बोल के चले जाते थे मगर हाथ में नहीं दे सकते थे, बहुत प्रॉब्लम था। उनके लिए जो भी टैबलेट्स वगैरह दिए गए थे, तो टाइम पे दवाई खाना, टाइम पे कौन सा टैबलेट कौन से टाइम पे कितना खाना है, यहाँ से लेकर के एवरीथिंग उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया है। और मेरे को तो बहुत आज के दिन पे बोलने में दुख लग रहा है कि मेरे 2 फ्रेंड्स ये कोविड-19 में आज दुनिया में नहीं है, चल बसे हैं। उनकी यादें तो साथ में हैं, मगर उन्होंने इतना कुछ फेस करने के बाद उनकी जान नहीं बचा पाए। सेम टाइम पे हम लोग बाकी कोशिश जारी रखे थे कि बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स है कि उनका खाना पीना का कुछ सुविधा होना चाहिए, उनके लिए हम लोग कोशिश में थे। तो ये केवल एक फैमिली का प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि ऑल ओवर सब लोग का था, ये बात बराबर है। लेकिन डिसेबल्ड पर्सन और उसमें भी ब्लाइंडनेस को साथ में लेकर के अगर कुछ करना है तो बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत मुश्किल थी। और उसमें हम लोग कोशिश किए कि एक दूसरे को संभालने का, एक दूसरे को हेल्प करने का, साथ ही साथ अलग अलग एनजीओ को इन्फॉर्म करके अलग अलग जगह पे जा करके, मतलब बाय व्हीकल से जाते थे और हेल्प करने की कोशिश किए हैं। बहुत जन को फोन पे ही कॉल करके उनके लिए बेड अलाउ करना, उनके एक हमारी फ्रेंड है बैंक ऑफ बड़ौदा से ही है, उनका ये कंडीशन के मतलब ऐसा हो गया था कि उनको बेड नहीं मिल रहा था और कौन सा भी हॉस्पिटल लेने के लिए तैयार नहीं था, बोल रहे थे कि जगह नहीं है करके। तो हम लोग घर बैठे मेरे बहुत सारे फ्रेंड अलग अलग जगह पे फोन करके, मेन डिपार्टमेंट में फोन करके, स्पेशल हॉस्पिटल में उनको लेने की व्यवस्था करके, डायरेक्ट जगह पे एम्बुलेंस बुला के उनको हॉस्पिटल में भेजे और बिल्कुल 7 दिन के अंदर अंदर वो मैडम ठीक होके घर पे आ गई। केवल एक पर्सन ऐसा नहीं था, अलग अलग जगह पे हम इस तरीके की ऑनलाइन सर्विस देने की कोशिश की है। बाकी तो और मैं आपके साथ जारी रहूंगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस जरूर करेंगे। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा।
जी, हम लोग बाद में ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. नाउ विल मूव ऑन टू दीक्षा डिंडे. First of all, thank you. It's an honor to be here. So, hello, Right. Thank am you. I audible? Yes, you are, Yeah. Diksha Ninde. Thank you for that. And thank you, Diksha Rai, for the question, and Kiran Babkar ji. हमने आपसे सुना काफी चीजें कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ क्या क्या चैलेंजेस हो सकती हैं. एक कम उम्र पे एजुकेशन, and in COVID time, there were even more difficulties of accessing healthcare and getting all sorts of things which one wouldn't have imagined. So inclusivity and accessibility has been a running theme. So going with this forward, we'd like to now talk about, while talking to Diksha Dinde, we'd like to talk more about what are the challenges and peculiar challenges for a woman with disability, right? With the intersectionality of being both a woman and a person with disability, what sort of challenges does that, what kind of peculiar challenges would that bring? तो दीक्षा डिंडे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने एक दिव्यांग औरत होते हुए आपने इतनी कम उम्र पे इतनी ऊंचाइयां छुई भी हैं, वे ये वाकई काबिलियत तारीफ. यहाँ तक आप पहुंचने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और आपको आपने कैसे इन कठिनाइयों से जूझा, और कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर और बेहतर. Okay. So, इंडियन सोसाइटी में पहले से ही लड़की का जन्म बहुत ही अनवेलकम तरीके से होता है. एंड आई बॉर्न विद अ डिसेबिलिटी, सो गर्ल चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी. और ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे घर वालों के सामने. बट माय पेरेंट्स टुक इट स्पोर्टिंगली. और मतलब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है कि बच्ची है, कैसे हम उसको रेज करेंगे, ये होती है बात. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सोसाइटी, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे सजेशंस आए इस दौरान. क्योंकि 1.5 साल के बाद मेरा जब जन्म हुआ इन 1993, 1.5 साल के बाद उनको डिटेक्ट हुआ कि आई विल बी नॉट एबल टू वॉक इन माई फ्यूचर. तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, और अभी भी उनको पता नहीं चल रहा है कि डिटेक्शन नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है. सो ये सब हो रहा था. और वेल विशर्स के सजेशंस बहुत अच्छे मिल रहे थे कि अरे लड़की है कि इसको एक काम कर दो, हॉस्टल में डाल दो. मतलब आई वाज अ बर्डन फॉर देम. मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए तो नहीं था, लेकिन उनके लिए, सोसाइटी के लिए एक बर्डन होता है इफ यू आर बोर्न विद अ डिसेबिलिटी. क्योंकि उनका जो कहना था कि अगर लड़का होता तो कैसे वो एक कोने में पड़ा रहता और वो जी लेता कैसे भी जिंदगी, मतलब आप लोग उसको संभाल लेते. लेकिन ये लड़की है हु लाइक ये पढ़ के क्या करेगी, मतलब क्या, why on earth you want to get her educated. फिर ये कहाँ काम करनी जाएगी, या फिर ये थोड़ी ना आपको संभालेगी, she is not like your heir. So ये सब बातें होती थी. What will you do when she will start menstruating, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. क्योंकि पीरियड्स का जो प्रॉब्लम होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है व्हेन यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन दैट टू व्हेन इट कम्स टू फिजिकल डिसेबिलिटी. क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, आपका बॉल कंट्रोल होना चाहिए, सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है. सो सिक्योरिटी की बात आती थी कि अरे आप घर में नहीं होंगे, आप काम पे चले जाएंगे, तो ये बच्ची को कोई कुछ करेगा तो आप क्या करोगे. सो पेरेंट्स से ज्यादा वेल विशर्स को बहुत मेरी चिंता थी. और वी टैकल्ड एवरीथिंग, दे टैकल्ड एवरीथिंग एक्चुअली स्पोर्टिंगली. फिर बात आई मेरी एजुकेशन की. अच्छे स्कूल में अप्लाई किया गया. वी आर टॉकिंग अबाउट 1993, 90s की बात कर रहे हैं हम. सो उस दौरान हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इतनी कुछ डेवलप नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. अभी जो सर कह रहे हैं कि वी हैव सो मेनी पॉलिसीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उस दौरान
आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्कूल थी पुणे में, वेल प्रेस्टिजियस स्कूल। उन्होंने मेरी माँ को कहा था कि अगर आप 5 घंटे इसके साथ रुकोगे तभी हम आपको एडमिशन दे सकते हैं। वो भी ऐसे होता था कि अगर 5th फ्लोर की बिल्डिंग है तो एक लड़की के लिए पूरी क्लास नहीं नीचे आ सकती, आपको एक लड़की को उठा के ऊपर जाना पड़ता था। सो आई वॉज ग्रोइंग अप, मतलब मैं बड़ी भी हो रही थी, मेरे साथ मेरी माँ भी बड़ी हो रही थी, मतलब उसकी भी उम्र हो रही थी। जब एक सेंसिटिव बच्चा ये रियलाइज करता है कि माय पेरेंट्स आर डूइंग सो मच फॉर मी, मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेरे स्कूल में वॉशरूम्स नहीं थे। मतलब म्युनिसिपल स्कूल में मुझे एडमिशन इसलिए मिली क्योंकि वो मेरी घर से 2 मिनट की दूरी पर है, और मेरी माँ मुझे अगर बाथरूम के लिए भी जाना पड़े तो वो आ सकती है यहाँ पे, वो मेरी ख्याल रख सकती है यहाँ पे, इसलिए मुझे एडमिशन दी गई। तब राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था और कंपलसरी एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ये भी नहीं था। कंप्लीट किया एजुकेशन, लेकिन मुझे इस दौरान अपने बॉडी पे कंट्रोल करना सीखना पड़ा। मतलब आई स्टार्टेड कंट्रोलिंग माय ईटिंग हैबिट्स। मैंने खाना कम किया, क्योंकि अगर मेरी माँ को मुझे उठाना पड़ रहा है तो मेरा वजन भी बढ़ रहा है। अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मुझे एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे। सो आई हैव टू कंट्रोल माई ड्रिंकिंग ऑल्सो, मतलब पानी भी मुझे कम पीना है। मुझे अगर जाना भी है, आई एम डिपेंडेंट, मतलब मैं अभी कोई भी बात बोलूं कि आई एम अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन, फिर भी मुझे अगर वॉशरूम के लिए जाना पड़े, मुझे बाहर जाना पड़े, तो मुझे पूछना पड़ता है कि क्या आपके पास एक्सेसिबल टॉयलेट है। सो आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम डिपेंडेंट, आई एम स्टिल डिपेंडेंट। सो ये जो छोटी छोटी चीजें थी जो अभी आगे मेरे काम में इम्पोर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया, वो मुझे बचपन से ही मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और सब अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन इस दौरान मुझे एक और चैलेंज फेस करना पड़ा कि आई स्टार्टेड फीलिंग अलोन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ क्योंकि मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छे दोस्त मिले, लेकिन मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि लंच के दौरान रिसेस टाइम में हम फ्रेंड्स के साथ एक साथ बैठ के टिफिन खाते हैं। आई नेवर एक्सपीरियंस Automatically mute. I think she is stuck, right? We'll wait for a minute. ईशा, if you can hear us, तो आपका वीडियो स्टक हो चुका है। I You're on mute if you're saying something. I think she's Hello. Yeah. Hello. Yes. Hello. I am so sorry. Yeah. Not a problem. Please go Yeah. ahead. तो मेरी माँ को बहुत सफर करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये करना पड़ेगा, तो ये स्टेप्स मैंने लिया। फिर आगे जब कॉलेज की बात आई तब फिर से सेम कि वी विल नॉट अलाउ यू टू गेट इन दिस कॉलेज, क्योंकि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ये सारे चैलेंजेस हो रहे थे एंड यू नो आई ओवरकम ऑल ऑफ दैट। डिप्रेशन भी था, एक जो सेंस रहती है कि आई एम नॉट इंक्लूडेड इन द सोसाइटी, ये भी था। ये सब हो रहा था। फिर आई फेल इन लव विथ माई लाइफ। मैं ये किस्सा बोलती हूँ क्योंकि आई गेट अ चांस टू मीट दिस गर्ल फ्रॉम एन ऑर्फनेज, और मैं इतने साल तक कह रही थी कि यू नो मैं चल नहीं सकती, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये हमेशा मुझे ही रिजेक्शन क्यों आता है, व्हाई आई एम नॉट इनवाइटेड। मेरे रिलेटिव कभी मुझे बुलाते नहीं है, व्हेन इट इज अ वेकेशन कभी भी नहीं, आई एम नॉट ऑलवेज इंक्लूडेड इनवाइटेड इनटू द पार्टीज। सो वो लड़की का एक्सपीरियंस मुझे ऐसे सिखा के गया कि शी इज अ गर्ल हु हैज नो पेरेंट्स। फिर भी वो मुझे कह रही है कि दीदी जब तुम कलेक्टर बन जाओगी तब मुझे यहाँ से लेके जाना। सो
दैट वाज अ वैलेंटाइंस डे 14th फरवरी 2013 की बात है ये। और मैं एक लड़की जिसके पास सब कुछ था, वो रो रही थी। वीडियो म्यूट हो गया। Stuck again. हेलो, हाय दीक्षा। हाँ जी, Bye. सॉरी। अभी आप ऑर्फनेज के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी, सो ये लड़की है जिसके माँ बाप नहीं है, उसको कोई एक ऑर्फनेज संभाल रहा है। वो लड़की मुझे बोल रही है कि विल यू बी एबल टू टेक मी टू योर होम जब आप कलेक्टर बन जाओगे। तभी मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग आई कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं देख सकती हूँ, मेरा इंटेलिजेंस भी अच्छा है, मतलब मैं सोच सकती हूँ, मुझे पता है कि कुछ क्या गलत है क्या सही है मेरे लिए। और अच्छे माँ बाप मिले हैं जो सपोर्टिव है, फ्रेंड्स है, मैं देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, ये सब कुछ तो है मेरे पास। फिर भी आई एम अ कंप्लेनिंग, आई ऑलवेज कंप्लेन। सो ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था और फिर आगे का मेरा काम शुरू हुआ। अभी भी काम करती हूँ तो चैलेंजेस ऐसे एज अ गर्ल नहीं आते, आते हैं सिर्फ व्हेन इट कम्स टू माय पीरियड्स और व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबल टॉयलेट्स, इतनी ही आती है। फिर भी एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी की अगर मैं बात कहूँ, और अगर आप एक ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हो, यू गेट सो मेनी अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिलता है आपको, तो यू नो पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग एट यू कि आप ऐसे हो इसलिए आपको ये सब मिल रहा है। सो यहाँ पे मेरा इंटेलिजेंस जीरो हो जाता है। मतलब जब कॉलेज में भी या फिर स्कूल में भी आई यूज टू परफॉर्म वेल, मतलब फर्स्ट 5 में नंबर आता था, तभी ऐसे ही होता था कि अरे आप ऐसे हो ना, इसलिए आप आपके टीचर के फेवरेट हो और इसके लिए आपको एक 4-5 नंबर ज्यादा मिल गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस जीरो हो जाता है कि आप कितना भी कुछ करो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको खुद को प्रूव करना है कि नहीं भैया मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला है, मैंने इतनी मेहनत की है और मैंने इतना पढ़ा है इसलिए मुझे ये मिल रहा है। सो या दैट्स ऑल आई फेस्ड। थैंक यू सो मच। Thank you for that insight, Diksha. More power to you. You spoke Thank you so about much. accessibility, and there needs to be a mechanism in place which needs to, and even the measures needs to be very inclusive. That takes me to the next question I would like to ask George, sir. So we would like to know what was the initial responses to the stringent measures that were simultaneously implemented along with the lockdown. There were policies like social distancing, not touching unsanitized surfaces. Now, these measures can be especially tricky for the people who are blind and who are visually impaired, especially to that community. So, how was this information first taken and then circulated to people so that they are not more prone or susceptible to the virus? So, how did that information get circulated? Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. March 2020 was when this pandemic actually stormed India, and I believe it was a new phenomenon which hit India, and the government was at a loss. So were we, the people, and it was kind of these restrictions that you mentioned about hand washing, keeping your social distancing, and no touching, various things like that was definitely very restrictive. But the point is that this is a problem which every Indian was kind of facing, and being visually impaired and blind, I think this proved to be a bit more of a hassle because people were scared of stepping out of their homes, and that proved there were a number of challenges which we run a helpline called Highway Helpline, where people from all over the country actually call us up, and we got calls which actually reflects the impact of these restrictions, and also about the other
impact on the India as a nation. Number one, I think we did get a lot of calls where people did not have the basic food. They could not go out to buy rations. They didn't have the money to buy rations. And they didn't have people who would help them out to buy rations. And that was the biggest challenge. Number two, there was problems. Many people were actually going back to their hometowns. Travel was a problem, and people had to stay on in their cities. Many people lost their jobs. Many people did not have jobs. Like there are people who are street hawkers. There's a place called very close to Bombay where there are close to 500 families of visually impaired people who live. And most of them actually earn their livelihoods through street hawking or hawking on trains. And their livelihoods had gone. And so they didn't have kind of resources to kind of buy their rations and so on. Then there were also people who could not pay their house rents. There were people, there were issues, like there was a very interesting call where there was a couple who called us up from Mumbai, where the landlord was pestering them for the house rent. And then the landlord was harassing them, like they had a little baby. One afternoon, when the mother was breastfeeding, a guy was standing at the door and watching. And then, suddenly, little while they found that the child was missing. And when these husband and wife complained and kind of looked around, finally, after about a few hours, the guy came and returned the baby. All harassment, So the point is, there are issues that have been created because of the pandemic. The restrictions have been created, but there were also human-created issues. There was a couple who had gone to from Madhya Pradesh, from Bhopal. They were away in Jabalpur, and that's when the pandemic hit, and there was a lockdown. And the lady was expecting, and she had to be hospitalized. They didn't have the money because their home base was Bhopal, and so we had to do a lot of fundraising to actually support people who needed to pay rents, people who had these emergency expenditures. There were also cases where people didn't have the food. There was a hostel in Pune. There were two hostels in Pune, a girls' hostel and a boys' hostel. They used to pay their rent through money that was earned through a music band that they used to have. Now, during the pandemic and during the lockdown, the band was non-functional. So they didn't have the money to pay the rent. So we had to kind of organize the rent for them. So, and then there was cases like there was this gentleman who called us up from somewhere in North India. He had a bank account, but the banks, for some strange reason, are hesitant to issue debit cards and internet banking to blind people. And this chap had the money in the bank, but he, due to the pandemic, could not go to the bank or an ATM to collect money. And as a result, he was stranded. There were people who had to travel, they were stranded. And then, of course, Kiran has mentioned a few problems, which again are very common problems which blind people face across the country. But interestingly, there were a lot of volunteers who had come into action. There were NGOs that had come into action. There were corporate houses who had come into action. So we used to kind of have common WhatsApp groups. We had common email groups where we would put up our problems. I am an Ashoka fellow, and there are Ashoka fellows all across the country. So we formed a network, and we would kind of put in the common network that, okay, there are 3 people in Mumbai and Borivali who need rations. So moment somebody said, I can go and supply rations. So immediately we give them the phone number and the details. Likewise, this hostel that I mentioned about in Pune, immediately there was an Ashoka fellow in Pune who said, give me the details. I will arrange for resources to be reached to the hostel. There was this hostel in Bijapur in Karnataka where there was a similar issue of resources. There again,
we managed to get an NGO who are based in Bijapur to actually supply food. So because of the communication networks of WhatsApp and emails and internet connectivity, I think we were able to kind of, sitting in Delhi, actually reach support to various people across the country. And then the government in March had issued very clear guidelines as to how people with disability has to be kind of reached and supported. And this document is available in accessible formats as well. But the sad thing was that the government network took a long time to come to terms with what they needed to do, how they needed to respond. Very often when blind people went to a ration shop to collect their ration, they were told that you are not eligible because you don't have a ration card. But the government had very clearly said that no discrimination, ration card doesn't matter. At this point of emergency, everybody is, especially people with disability, have to be given rations. So people did not know what the rules were. And as a result, though there were government norms and government policies put into place, the policies were not being implemented on the ground. And this was actually the story of the first wave that hit the country, And there's another problem, people with disability who are registered, they get a pension. People who don't have jobs, they get a pension from the government. Now that pension got stuck. For months, people are not paid their pension. And then this pension also is, varies from something like 700 rupees in certain states to 2,000, 3,000 rupees in certain other states. And very often it is this pension that supports the entire family. You can imagine the financial condition. But this pension was also kind of denied simply because the government machinery was not kind of geared to deal with the situation. So there were a number of such problems which kept cropping up, and we had to think on our feet. But I must say there were lots of people across the country who rose to the occasion, were willing to help. They gave donations. They were willing to supply rations. They were willing to volunteer and help people. So, so there was the good and the bad, which were operating simultaneously. But I think people with disability were extra vulnerable at this point of time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, George. Thank you for that answer and all of the stories and the anecdotes and all the problems that you mentioned for persons with disability, generally in the COVID and the pandemic. Moving on from this, one of the things that we talk about and which is commonly sensed is something about an hesitation that is sensed around it. It is of appropriate terms while addressing persons with disability, especially different people on the spectrum. So I'd like to ask everybody, and this is a common question for all three panelists, that how do you deal with the lack of awareness and sensitivity, especially when it comes to addressing and also addressing persons with disability on the spectrum? तो मतलब लोगों की आमतौर की बातचीत की भाषा में वो काफी हद तक एक झिझक सी रहती है कि जब वो किसी दिव्यांग इंसान से बात करते हैं कि वो कौन से शब्द इस्तेमाल करें। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन से ये शब्द उचित होंगे जिसके इस्तेमाल से इज्जत और समानता हो? The first part of the question, and second part है कि a lot of times there are these statements that are made by the ableist society. That's so lame, that's retarded, like things that are loosely said, right, as a matter of a joke. तो आप जब ऐसे शब्द यूज होते हैं, जब आप किसी को कहते हैं कि अंधे है क्या, आपको दिखने का है, या वो लूली है, उससे क्या होगा, अगर ऐसी चीजें कोई आमतौर की भाषा में बोले तो आप इससे कैसे इंगेज करेंगे, आप कैसे उससे बातचीत करेंगे, और क्या आपको लगता है कि हम क्या चीजें कह सकते हैं जिससे ऐसी बातें रोक सके ताकि ये आगे ना इंसान बोले और थोड़े सेंसिटिव हो इन चीजों के बारे में बोले? ये क्वेश्चन आप तीनों में से जिसको आप
whoever wants to start with it, या जिसको शुरू करना है, हम एक पैनलिस्ट के बाद फिर हम दूसरे एंड जी मैं बताना चाहूंगा कि जो पहला वाला क्वेश्चन था कि बहुत बार के लोग ये वाला डिसेबिलिटी को लेके कुछ वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हमको क्या लगता है कैसा है, तो ये इसका आंसर तो अलग अलग उम्र में अलग अलग हिसाब से सोचा जा सकता है। जैसे बचपना में कोई बोलता है तो बहुत मतलब हर्ट हो जाता है, दुख लगता है कि यार ये मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसकी वजह से कुछ पावर कम हो गए ऐसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और फिर भी कोई लोग हमको इस बात से अगर ऐसे बोल देते हैं, तो जब हमारा दिल, जब हम सोचा है कि इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ब्लाइंडनेस को, और कोई बोल देता है तो उसमें कोई दुख नहीं लगता है, बल्कि वो एनर्जी देता है कि ये वाला पॉइंट मेरा वीक है, इसके लिए इसने ऐसा बोल दिया डिसेबिलिटी का, बट मैं उसके आगे जाके इनको कुछ करके दिखाऊं। यानी वो लोग को दृष्टि है, बट हमारे पास कैसा अंतर्दृष्टि है, दृष्टि के पार देखने वाली दृष्टि है, उसका इस्तेमाल करके उनसे कुछ कम नहीं है वो शो करने का एक चांस बोलो, एक अपॉर्चुनिटी बोलो, हमें उससे मिल जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। उसको हम थोड़ा पॉजिटिवली देख लेते हैं, बल्कि दुख लेके नहीं बैठते कि इन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि कितना भी करेंगे तो उनका क्या होता है कि उनका एक लेवल होता है विचार करने का, हर एक जन का। सीखा पढ़ा अच्छा आदमी ऐसा वाला वर्ड यूज नहीं करेगा, बल्कि जो करेगा तो नहीं सीखा हुआ करेगा, तो वो उसका जो मेमोरी है उस हिसाब से वो बोल दिया, तो हम उसको इतना सोच में नहीं लेते हैं। अभी सर और कुछ अलग टाइप में सोचेंगे तो मेरे को मालूम नहीं, ये तो पर्सनली हर एक जन का अलग अलग सोच रहेगा इसके बारे में। और दूसरी बात आपने बोला कि अगर ऐसा भी होता है तो क्या इसमें हम सोच सकते हैं अलग से, तो मैंने जैसे बोला कि हम आगे चल के इसको पॉजिटिवली अगर देखें तो कुछ अच्छा भी रिजल्ट दे सकते हैं। थैंक यू किरण जी। जॉर्ज या दीक्षा, आप में से कोई, would you like to answer these questions? I will go after the lady goes for it. Thank you. Diksha? Thank you, sir. Okay, so I conduct various workshops for school children, sensitization workshops. मुझे लगता है कि बड़े जो है, मतलब जो बोलते हैं ऐसे, उनको अभी नहीं, मतलब वो नहीं समझेंगे, कितना भी उनको करेक्ट करो तुम नहीं, वो नहीं समझेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है कि वो आगे आके पूछते हैं कि am I using the correct word? Like handicap है तो handicap is not a correct word, okay? So person with disability, physically challenged, blind है क्या? नहीं, blind अच्छा करेक्ट वर्ड नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड इज द करेक्ट वर्ड। सो बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो आगे आके पूछते हैं। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद लाइक कंडक्ट वर्कशॉप्स फॉर दिस चिल्ड्रन, आई यूज्ड टू आस्क वन क्वेश्चन, वन कॉमन क्वेश्चन फॉर देम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। जब नॉर्मल और अबनॉर्मल हम पूछते हैं, बच्चों के तरफ से जो आंसर्स आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि उनकी जो कंसेप्ट्स है बिल्डअप हो चुकी है या फिर वो हो रही है, दे आर ऑन द वे। ओके, सो जब अबनॉर्मल की बातें आती है या फिर नॉर्मल की बातें, नॉर्मल मतलब कौन सा इंसान की बच्चे बोलते कि हाँ दीदी जो अच्छा दिखता है, जिसकी आंखें ठीक है, जो चल सकता है, वो नॉर्मल इंसान है। अच्छा ठीक है, फिर अब नॉर्मल कौन है? दीदी जो पागल होता है अगर कोई किसी का पैर नहीं है, ऐसे ऐसे कोई भी कुछ भी बच्चे बोल दे, उनको पता ही नहीं है ना ये क्या है, ये हमको उनको सेंसिटाइज करना पड़ता है। सो ठीक है, फिर काउंटर क्वेश्चन आता है कि आपको मैं अब नॉर्मल लगती हूँ कि नॉर्मल लगती हूँ। फिर बच्चे चुप हो जाते हैं, क्योंकि that's where their thinking process starts कि अच्छा मतलब ये जो नॉर्मल है, these are just definitions कि अब नॉर्मल कौन होता है और नॉर्मल कौन होता है। मतलब अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ और एक अच्छा खासा इंसान जो अगर रास्ते पे थूक रहा है, कचरा फेंक रहा है, तो वो अब नॉर्मल है या नॉर्मल है? ये अब जब क्वेश्चन आता है तब बच्चे सोचने लगते हैं। सो ये सोचने की बात है कि आप कैसे लेते हो चीजों को, और आप मैं ऐसे मतलब अगर मुझे दिखता है कि कोई ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, सो आई सिंपली आस्क देम दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फॉर यू, और हाँ हो जाता है। अभी बुरा नहीं लगता, जैसे सर
कह रहा है कि हाँ ठीक है भाई, ये नहीं सुधरने वाले लोग, तो हम क्या करें, हम अपना काम करते रहेंगे, ये अगर कुछ भी बोले। Thank you. Thank you for that. So, Yeah. So let me put in my 2 bits on this. Now, when a person is called blind or you call somebody deaf, when I first started promoting cricket for the blind, I used to refer to it as cricket for the visually challenged. So I found that most people did not understand what I was saying. So there was a problem of communication. So I switched to cricket for the blind, and cricket for the blind is what the game is called the world over. And I've traveled the world and have interacted with people who are visually impaired and blind. And, most people who are blind don't mind the term blind. But yes, if you say he is visually handicapped, handicapped is definitely a derogatory term. Now, more than these terminologies, I think it is the attitude and the response of people that is more critical. Now, a lot of people talk about language and the right kind of language, the appropriate language, and so on. But very few people talk about the appropriate behavior, the appropriate response, the appropriate attitude, the appropriate approach. Like, for example, I think Diksha was saying that, she went to school and the classroom was in the 5th standard. It's a 5-storied building. What does it hurt the school to kind of rearrange the classroom? After all, a room is a room. They could have very easily brought the classroom down. It is not a question of one child being lifted up, and it's not about 30 children being brought down. The 30 children can very easily come to the ground floor, but the dignity and the respect for that one child was being compromised. Every time you carry somebody up, you immediately are compromising on the dignity. So I think it is about recognizing people as people, recognizing people as citizens of the country, and their equality and equal access to rights and dignity. To my mind, those are things to be focused. But a lot of these people, now the Prime Minister was very quick to bring in the term Divyang Jan. Now, it's a controversial discussion, but I would definitely lay my opinion on the table, and a lot of people hold this opinion, that what is divine about me? There's nothing divine about me. And if I'm a divine person, the attitude of the people who are supposed to be my devotees is still not what it should be, So this is just nomenclature which people are playing with. There is a section of the community in North India who think that Divyang Jan is a great term. But I think most of other parts of India, people are against the term Divyang Jan because there's nothing Divyang about us. There's nothing divine about us. And so these terminologies are okay for discussion. It's an armchair topic. But I think on the ground, I think what needs to change is the attitude. What needs to change is the action on the ground, the implementation on the ground. The chief, now Mr. Sanjay Kadam is the Deputy Commissioner of the state of Maharashtra. I don't know whether you know that the Chief Commissioner of for disability, persons with disability in Pan India, the last man retired nearly a year and a half or 2 ago. There's no replacement for the person as of now. There's no Chief Commissioner for persons with disability at the moment. The Secretary of the Ministry of Social Justice and Empowerment she's got additional charge. Now, and the Chief Commissioner's office is supposed to be addressing issues of discrimination, is supposed to be addressing issues where the law is not being implemented. They're supposed to be sitting in every day and attending cases. Now, a secretary and having additional charge, you can very well understand what is the time availability for the secretary to come and sit in the court and listen to cases and address issues and perform the task of a chief commissioner. Now, the Rehabilitation Council of India
does not have a chairperson for the last 1 or 2 years. Now, so this clearly says that where is disability on the pecking order as far as the government and the nation is concerned. So I think I would not give too much of credence to whether I'm called blind or whether I'm called drishtibadit or whether I'm called andha or whether I'm called divyangjan. As long as I have been respected and given my dignity, given my opportunities, given my access, I think that's where I would rest my case. I guess I would like to add something here. May I? Yeah, please. Yeah. बहुत बार मतलब when you are a person with disability, लोग बोलते हैं you are a special child of God. तो एक बात मतलब उनको पूछने को like I would like to ask them कि क्या अगर भगवान की मैं इतनी ही प्यारी बच्ची हूँ तो उन्होंने ऐसे मुझे प्रॉब्लम दी ही क्यों at the first place. Okay, what is special about my disability? Nothing. Like मुझे दिन में बहुत 1000 बार मुझे कोसना पड़ता है खुद को कि यार मैं ये नहीं कर सकती. So there is nothing special about that. I would like to share one more experience with you कि जैसे कि सर ने कहा how you respond to it, that's what matters the most. For the first time I went to Balewadi Stadium to watch the cricket match और after this match वहाँ पे wheelchair नहीं थी, so my brother has to carry me for like half a kilometer till the stadium. उन्होंने मुझे उठा लिया था, मेरे कपड़े ऊपर हो रहे थे, मतलब मेरा टी शर्ट ऊपर जा रहा था और people were staring at me, they were laughing at me. So when it comes to dignity कि it doesn't matter कि आप कोई भी words use करो, आपको response कैसे करना है situation को वो भी matter करता है. Okay, that is the one thing कि people लोगों का कैसा response था. Second thing, when I was waiting at the parking lot for my friend, वो कार निकाल रही थी. Suddenly one police officer, he was a havaldar, he came and he asked me, why on earth you want to roam around? मतलब I was sitting on my wheelchair and he suddenly came at me और उन्होंने पूछ लिया. So like my right to enjoy small things, ये भी उनको पता नहीं है. नाम क्या आप यूज करते हो, आप क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, ये बहुत आगे की बात है. आप सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो ये पहले आता है. Thank you for that. This was very important. George sir, you had once quoted that blindness isn't a problem, mindset is. Absolutely. Yeah. With kind permission, can I add one sentence here? Sure. Yeah, if you remember, we had one panelist, Bharti Sharma of Shakti Shalini from Delhi, Right. and she had said a wonderful thing on our panel, and that was all the other people who feel they are normal, they should not forget that they are temporarily abled. So people who sometimes use wrong words or who behave in a fashion where they hurt the other people should always remember that we are just temporarily abled and there's nothing to boast about and nothing to call us as normal people. So I can. And one more thing, sorry. Go ahead. Yeah, one more thing is हम बहुत accessibility की बातें कर रहे हैं. अभी मैम ने कहा कि we are temporarily abled. Okay, so accessibility is not just for persons with disability. मेरी एक मैम है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था ऑडियंस को कि हमारी भी कभी उम्र हो जाएगी, हमको भी लिफ्ट लगेगी. इट नॉट जस्ट दैट व्हीलचेयर यूजर्स को या फिर पर्सन्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड दे नीड्स दीज फैसिलिटीज और दे नीड रैम्प और एनीथिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स. अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया तभी आपको लगेगा ही ना ये जो चीजें हैं जो आपको लगेगी. So it is not just for the people of with disability. You have to think this concept like ये सबके लिए लगने वाली है ये जो चीज है. हम मिक्सर अभी क्यों यूज करते हैं? पहले के जमाने में मिक्सर तो नहीं था ना. So that is a kind of an accessibility. We use high heels. क्यों? हमारी height बढ़ाने के लिए we use high heels. That is a kind of accessibility. We use चश्मा. So
कुछ चीजें हैं जो दिखती है, कुछ चीजें जो नहीं दिखती है. We all are different and we should accept that fact. You know, the issue is basically all of us human beings are very inward looking. We are very self-oriented, and we care very little for people around us. Okay, we care if there is a son or daughter or brother or sister who's disabled, yeah, we'll be concerned. But if there are somebody in the colony who's disabled, most of us won't even bother about that person. It's the problem of that family. And that attitude gets scaled up when it comes to a nation. So the people who are in legislation, who are there in planning, who are there in kind of budgeting, they all look at, they don't look at the diversity that exists in the community. And that is the primary reason why, the exclusion happens. Now, I think it was 2015 November, the Prime Minister demonetized the country, and the 500 rupee notes and the 1,000 rupee notes were out of the market, and new notes came in. Nobody bothered to look at whether the new notes would be easily recognizable by blind people. There were multiple type of coins. There were several different 1 rupee coins. There were different 5 rupee coins. There were different 2 rupee coins. It was very difficult for a blind person to identify what the coin was. We did raise this issue. We said, sir, this country belongs to all of us. It doesn't only belong to people who can see. And then we raised this issue with the court. We took the matter to the court. The Delhi High Court kind of told the ministry and the Reserve Bank of India that this needs to be rectified. But then the argument came that if we are to again kind of redesign the whole thing, there'll be another demonetization. And you know what the country went through with the first demonetization. So the solution was an app which came up from the Reserve Bank of India. Now today, if I use an app and I'm standing in queue at a movie hall wanting to buy a ticket, and I give a 500 rupee note to the counter and the ticket is 125 rupees, when he gives me the change, I will be using my app to kind of identify each currency note. And the people behind me are going to be shouting. They're going to be saying, these mobile apps and things are not so solutions to problems like this. Then the coins, the coins were, the court again ordered that the coins had to be redone. So the government agreed to redesign the coins. The coins were redesigned and they were launched before the 2019 elections by the Honorable Prime Minister. But those coins are still to be seen in the market 2 years later. So that, and then, this whole thing about touch screens, everything is touch screen, and you go to a petrol pump, you fill petrol, or you go to a bank, you want to update your passbook, there is again a touch screen over there. Now, so people are totally kind of unaware and unconscious of the fact that there are people with disability also who would be using these public services. There is an RPWD Act, Rights for Persons with Disability Act 2016, which was enacted by Parliament. And it very clearly talks about accessibility in public. Public buildings have to be accessible. ICT services have to be accessible. Transportation has to be accessible, And today, if you take a stock of what has happened, nothing really has happened. What has happened is minuscule. So that is the kind of priority that people with disability have in this country. That's the stature. So there is a lot to be done, and and it's a humongous task. And I think I don't know what tomorrow holds. Thank you. As you said, there is a lot to be done. There's a lot to be taken into consideration. We have to learn and unlearn so many things. And then we have to teach it to the children so that we can curb the discriminatory attitude at the earliest. Like Diksha mentioned, that we have to do that at the earliest and educate children about it as well. Now that we are on the topic of children, I want to know from Kiranji. Kiranji, please ये बताइएगा कि जब अभी लॉकडाउन है, अब सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो बच्चे
फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और उनको जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको क्या सुविधाएं उपलब्ध किया गया है, उनके लिए क्या प्राविधान बनाए गए हैं। जैसे आपने हमको बताया था कि देयर इज सिस्टम कॉल्ड टॉक बैक और जॉज जो कंप्यूटर के लिए है, जो स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजीज है, क्या ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध किया गया है? और क्या पेरेंट्स को स्पेशल करिकुलम दिया गया है ताकि वो घर पे बैठकर उन बच्चों को असिस्ट कर पाए? Yes. बस एक सेकंड किरण जी, बस इसके लिए 3 मिनट है क्योंकि हमें स्पेसिफिक I'm क्वेश्चन talking in जी। short only. हाँ जी। जस्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम ब्रेल पढ़ते हैं ये सब टचेबल है, बिना टच का हम नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन ये पढ़ाई पॉसिबल है ही नहीं है कि किसी को मैं ब्रेल में सिखाऊं और सामने वाला ब्रेल में पढ़ ले उसको। हमें उसको टच करके ही पढ़ना है। इसके लिए स्टार्टिंग का जो पढ़ाई होता है, जो ब्रेल में पढ़ना है, वो तो ऑनलाइन पॉसिबल है ही नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। सेकेंड थिंग है कि हमारी जो विजन इनसाइट फाउंडेशन हम चलाते हैं, उसमें पहले से ही हम लोग जो ब्लाइंड बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आदिवासी विभाग में पढ़ रहे हैं, उनको हम हमारी संस्था की ओर से एक ऑडिबल डिवाइस देते हैं जिससे वो पढ़ पाए, और साथ में उसका जो ईयर में वो पढ़ रहा है उसका पेन ड्राइव जिसमें उसका पूरा पढ़ाई हो, ऐसा सारे ऑडिबल बुक्स हो उसमें, वो लेकर के वो पढ़ाई करता है। अभी ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हम यहाँ से कुछ करेंगे तो उनको दिखेगा भी नहीं और वो कर भी नहीं पाएंगे। जस्ट हम टॉकिंग में जो भी होगा वो खाली फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हम खाली अलर्ट करते हैं उनके पेरेंट्स को कि आप यूट्यूब पे जाओ, शो एंड शो चैनल को ऑन करो और इनको ये लेसन पढ़ाओ। वो सुनते हैं, देखते तो नहीं है, लेकिन उससे भी काफी जानकारी उनको मिलती है। जस्ट मैं प्रगति ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहां पर जो प्रिंसिपल है मिस्टर तारडे, उनसे भी कल बात किया तो उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन क्लास हम लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि वो खाली टॉकिंग में चलेगा। और उनके पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि इनके बुक्स ऑडियो में आप इनको पढ़ाओ, और जैसे मैंने बोला स्क्रीन रीडर है मोबाइल में या कंप्यूटर में जॉज होता है हमारे, उसका इस्तेमाल करके इनको सिखाओ। हमारी संस्था क्या करेगी, ईमेल लेके उनके ईमेल पे उनके बुक्स सेंड कर देंगे, और उनके घर पे कोई हो तो वो उनको हेल्प करेंगे। जैसे पहले बच्चे लोग को सारी ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम नहीं होती है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन एक बार किताबें डाउनलोड हो गई है तो वो घर बैठे बैठे उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी अभी इनका जो एग्जाम लेने का सिस्टम है उसमें और भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के पीछे सारी संस्था लगी है, और उसमें भी कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। थैंक यू किरण जी। Yeah, this online education has had, while conceptually it seems to be a very good idea, it seems to be a kind of a good substitute for face-to-face offline education. But with, the fact of the matter is that India does not have good internet connectivity when it comes to rural areas. Right. Number one. Number two, power connection, electricity. We don't know when the power cuts happen. Delhi and Bombay probably have good electricity, but most other parts of the country is under power cut most of the time. So if the power is gone, you can't run your computers, your internet, and so on. The third thing is in a house. For example, in Delhi and Bombay, in the kind of societies maybe you and I move around, probably every member of the family has a smartphone and a laptop or a tablet. But most people who come from the middle class and lower middle class and the poorer communities, they will struggle to have even one device among 6, 7, 8, 10 people. So where does a disabled child get a chance to use that device to attend a class? So these are issues which are pan-India. And it's easy to say that, we go digital with our education, we go digital with our country, but the fact of the matter is, majority of our population may not have necessarily access to these three things: a device, power, and internet connectivity. Thank you so much, George sir, for that insight. And on the topic of accessibility, Diksha, I'd like to ask you, one of
the running themes in all of your work, all of your initiatives that you've taken has been accessible infrastructure, whether it be teaching underprivileged children or doing initiatives for persons with disabilities. So I'd like to understand what are some of the steps that the organization and individuals can take to ensure that they can reduce these physical barriers, especially for persons with mobility issues and across the spectrum also. Okay. Firstly, accessibility के बारे में मैंने जो कहा कि that is not just what I need. ये सबकी जरूरत है. आप अगर ये सोच ध्यान में रखोगे और आगे बढ़ोगे, so you will understand the needs of a person with disability. I would like to give one example. COVID जब आया, just a second. COVID जब आया, so everyone was quarantine at home, और like बहुत सारे लोग complain कर रहे थे कि you know we never been out, हम बाहर नहीं जा सकते, we are getting bored at it. But as a person with disability, I have spent 22 years of my life quarantine at home. So ये जो attitude है कि आप suddenly ऑनलाइन एजुकेशन तब ओपन हो जाता है जब जब सारी दुनिया एक जगह पे घर पे बैठ रही है, तब ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ये सब फैसिलिटीज तब ओपन हो जाती है. ना कि जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ 2 साल तक. मतलब आप कितने भी अवार्ड्स जीतो, आप कुछ भी करो, आपका रिज्यूमे कितना भी अच्छा हो, आपको फील्ड वर्क करना है, आपको पैसे कमाना है, अवार्ड से पेट नहीं भरता, आपको काम पे जाना पड़ता है. वो मोबिलिटी इशू फेस जब हम करते हैं, ऑनलाइन जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, और मैं जब 1 साल पहले जब व्हेन आई वाज ट्राइंग, हेलो when I was trying to get a job, to find a suitable job, everyone was telling me कि sorry ma'am, field work है and we will not able to provide you any kind of work employment. Suddenly COVID आया and work from home की facility start हो गई. ये जो चीजें है ना कि हम हमेशा वाइड स्पेक्ट्रम से नहीं देखते हैं कि ये सबकी जरूरत है. You just look at like इंक्लूजन क्यों नहीं होता है कि अगर दीक्षा, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका वीडियो थोड़ा स्टक हो गया है. हेलो, हाँ जी, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी गॉन. सो हमको स्टेप्स इंक्लूजन की जब बातें आती है, you should ask one question to yourself कि अगर हमें सच में इंक्लूजन चाहिए, तो क्या फिर हमारे सर्कल में कोई ऐसा है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और who is belong to any other gender except he or she. क्या आपकी वोकैबुलरी जेंडर पॉजिटिव है, क्या आपकी वोकैबुलरी पॉजिटिव है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये छोटी छोटी चीजें हैं. अगर आप आपके भाई बहन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको लेकर बाहर जा रहे हो, यू आर गेटिंग अलोंग विद देम, यू आर टेकिंग देम टू पार्क, यू आर टेकिंग देम टू थिएटर्स, यू आर टेकिंग देम टू स्टेडियम, यहाँ से इंक्लूजन स्टार्ट होता है और लोग आपको ऑब्जर्व करने लगते हैं. सो ये ऑब्जर्वेशन की जो चीजें है वो आगे जाके एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर एजुकेशन में हो बहुत हेल्प करती है. पेरेंट्स का काउंसलिंग यहाँ पे होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होप्स छोड़ देते हैं इन बच्चों के जब व्हेन इट कम्स टू मोबिलिटी इशू. क्योंकि दीक्षा, आपकी आवाज रुक गई है. प्रॉब्लम आगे जाकर सोसाइटी में वी कैन सी कि हाँ कि एक्सेसिबिलिटी हमें चाहिए. अगर मैं बाहर ही नहीं जा रही हूँ, अगर मैं बाहर घूम ही नहीं रही हूँ, तो लोगों को नोटिस ही नहीं होगा ना कि अरे यार यहाँ पे रैंप होता तो ये बच्ची आगे व्हीलचेयर इसकी लेके जा सकती थी.
हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं बहुत बार खुद को कि घर पे ही बैठे रहेंगे या फिर नहीं जाएंगे, मिक्सअप नहीं होंगे। हम बाहर जाएंगे ही नहीं तो लोगों को नीड्स कैसे पता चलेंगी हमारी क्या है। सो इंक्लूजन स्टार्ट्स विद यू, दैट्स ऑल। कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमती थी तभी उनको पता चला कि हाँ यार ये इसकी ऐसी ऐसी जरूरत है, तो फिर वो मेरे जो नीड्स है उसके दौरान वो मेरे अरेंजमेंट्स कर देते थे। Right now I am working with Durga Devi Charitable Trust and I am working from home. So मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि काम करने के लिए, क्योंकि मेरे स्किल्स, मेरा कैलिबर उतना ही है जो एबल बॉडी का है। सिर्फ आई शुड क्लियरली say what are my needs, और क्या व्हाट आई कैन से कि इंक्लूजन हमारी कंपनी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मे बी अभी जो मैं स्कूल में थी, पास स्कूल में थी, आई वॉज द ओनली चाइल्ड हु वॉज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अभी जब मैं देखती हूँ कि देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रंस हु आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड दे आर गेटिंग एजुकेशन, एंड कॉलेज ने उनकी नीड्स समझ ली है एंड दे आर गेटिंग अलोंग विद इट। Thank you, Diksha. थैंक यू। Thank you. Sorry. Thank you, Diksha. Like you said, there is innumerable challenges that you had to face. Here, George sir, I would like to ask you a two-part question. The latter one being from the YouTube comment section. While some of us were still comprehending the challenges during the pandemic, you were in fact one of them who were pioneering the cause of providing relief to people through your helpline number. So now I would like to ask you, what were the challenges you faced while mobilizing the volunteers, the NGOs? And the second part of the question would be, how did your mental health get impacted because living in quarantine? एक्चुअली जैसे हम जो भी सोचते हैं कि कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ करे, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें होती है, वो पहले देखना चाहिए कि हम उनकी तरफ पहुंच सकते हैं क्या। अगर पहुंचने में दिक्कत है तो उसके लिए रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। अभी तो सब ठीक है कि सब रिलैक्सेशन है, सब पहुंच भी सकते हैं, मगर ऐसी सिचुएशन में अगर वहां पे पहुंचना है, अगर उनको कुछ देना है तो एक ही जरिया हमारे पास है, इंटरनेट का। और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जहाँ पर सच्ची में जैसे कि खरीद नहीं सकते बड़ी बड़ी चीज, जैसे मोबाइल है, एंड्रॉइड है, जो भी है वो नहीं ले सकते, तो उनके लिए मात्र एक ही रास्ता है कि हमको उनको यही सारी सुविधा देनी है। जैसे अभी कोविड-19 का ये सब पीरियड चल रहा था, तो हम तो सीखने की बात कर रहे हैं, हम तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की ये और बाकी रह गई कि उनको तो खाना भी नहीं मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमने डायरेक्टली एक वैन लेके उनके घर घर जाके उनको खाना, उनको राशन वगैरह देने की कोशिश की। करीबन 200 से ज्यादा परिवार इसमें शामिल थे कि वहां पर जाके हम लोग उनको खाना दे पाए हैं। और गवर्नमेंट की ओर से थोड़ा मैं इसके लिए ऐसा मतलब सहायता चाहूंगा, जिसको आप शायद जानते नहीं, यूडीआईडी बोलते हैं, यूनिवर्सल डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। ये जो है कि पर्सनल को एक बार डिसेबल्ड है जाहिर कर दिया है तो सारे तरीके के जो भी कंसेशंस है वो उनको देना चाहिए। बल्कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये आईडी हमारे पास होने के बावजूद भी हमें एसटी का स्मार्ट कार्ड लेना पड़ता है, या तो ट्रेन का अलग से पास निकालना पड़ता है, जो कि कंसेशन पास, मैं टिकट पास के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारी दिक्कतें आती है कि फिर उसके लिए अलग से लाइन लगाओ, उसके लिए अलग से जाओ पर्टिकुलर ऑफिस में, और ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद हमको वो कंसेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारा जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरा के पूरा हटना चाहिए। बस एक है, घर बैठे बैठे हम ये यूडीआईडी अप्लाई करें और उसका इस्तेमाल करके हर एक चीज का जो भी कंसेशन दिया जाता है वो हर एक ब्लाइंड पर्सन को या तो डिसेबल्ड पर्सन को मिलना चाहिए। ये सरकार की ओर से अगर हमें सहायता होगी तो जो एनजीओस है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज होगी
क्योंकि एक बार किसी भी हैंडीकैप ने, किसी भी डिसेबल्ड में मालूम पड़ गया है कि ये डिसेबल्ड पर्सन है, तो हमारी संस्था वहां पर जा करके उनको हेल्प दे सकती है हर एक तरीके का। जैसे स्टूडेंट हो उसको, जैसे बोला पिछले हम किताब की बात की, जैसे ऐसे परिवार है कि जो कि अभी कमाने में सक्षम नहीं है, उनको हेल्प देना है तो वो भी पॉसिबल होगा। बहुत सारी चीज उसमें कवर हो जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरा टिकट निकाल के आज भी मतलब जर्नी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। Thank you, Kiranji. George, sir, how did you navigate this roadblock, and what was the impact of that on your mental health? Well, thank God. Thank God, my mental health is pretty stable and okay. Yeah. As they say, I don't somehow believe in taking tension, and even during the pandemic, while we did run our office offline, work from home, and that was one. And number two, there was a lot of books to be read. There were a lot of entertainment around, and the family was at home, so everybody was. So it was we didn't really were not strained and pushed to the level of being mentally challenged at the end of the day. So that's the answer to your second question. As far as the first question is concerned, as far as getting support and help from volunteers and network and NGOs, as I mentioned earlier, also it was about networking. Mm-hmm. It was about connecting with people, spreading the word around. When you talk to person X, he will talk about 5 different people who potentially can help. Then we get in touch with those 5 different people. Those 5 different people, 2 of them are able to directly help. 3 others say, we can't help you, but we know of 5 others who can help you. So we get connected with them. So it was amazing how we actually connected with people in Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Orissa. These are the places where we actually were able to help people. And it was purely networking, and as I said, people actually swung into action. There were networks created. There was COVID relief groups created on WhatsApp. So when you had a problem, a need for ration somewhere, you put that out in the relevant networks, and immediately there would be people who would write back to you, connect with you, saying that, okay, give us the address. We can reach Borivali, or we can reach this colony in Kanpur, or this Hazratganj in Lucknow, wherever. So it was all about networking. And then when it came to monies, we also managed to raise funds. There were people willing to donate when they knew that this was going to be reaching out and helping people, specific people to pay their rent, or specific people to meet certain financial needs. So I think it was all about networking and making use of and building for the networks. And then we also did connect with a lot of offices of the government in different districts. Like, for example, in Maharashtra, we did get connected with a lot of district level officials to actually help people in places like Nanded, Aurangabad, and so on. So I think the operative word is networking and being able to communicate and let people know where the problem was, and connecting people who needed help with people who could potentially help. Right. Thank you. There's one more question on the YouTube comment section, and that is with regarding to how hard was it to use the Arogya Setu app? Was it easy to book your vaccination slot? How did you go about that? That's a great question. I don't know how I forgot about it earlier. The CoWIN platform, by and large, a lot of people have said it's not accessible, and that's been a major problem as far as there were a number of people from Kerala, Karnataka,
and Maharashtra who called us up and said that they were not able to kind of book their, and then we had to kind of again network with an NGO called Saksham, who were working at the district level, who actually helped, went out and and they have their branches in every state of the country. So we networked with them and gave them the names and addresses and mobile numbers of people who needed help. So their volunteers went across and kind of helped the blind and visually impaired people who needed help with vaccinations, right from using the COVID platform. This one, and then even the Arogya Setu is not great when it comes to accessibility, but then I guess COVID is more relevant than Arogya Setu. Arogya Setu, I don't think many of us use it, but COVID, yes, to get your vaccination. And of course, there are also, there's an organization in Bangalore that had actually connected with us, saying that they would be helping people across the country. Their volunteers would help people to help people get, use the COVID app and get vaccinated. NAB in Delhi had opened their premises. They had organized special vaccination drives. So we did send a lot of our callers to NAB Delhi for their vaccination. So wherever there were these vaccination drives, we also used the opportunity to, spread awareness among our networks. There are, close to 80,000 blind people who are connected with us over the years through the telephone, through the helpline. So we have their database. So we actually were calling them and asking them, do you have any need during this COVID period? And a lot of people had told us that they needed ration, they needed help with vaccination. So we were constantly communicating with them. And of course, these are all 80,000 people, but there are 5.4 million blind people in this country, according to the 2011 census. So so this is just a drop in the ocean. Thank you, Jyot sir, for that question, for that answer. We have another question on YouTube by Zakir Siddiqui, which says, how can one change the perception of persons with disability from pity to respect? YouTube पे एक और हमारे पास जाकिर जी से एक सवाल आया है कि हम लोगों की दृष्टि कैसे बदल सकते हैं फ्रॉम लोगों पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेके कि वो कैसे एक बेचारा तरीके से नजरिए से ना देख के उनको इज्जत और सम्मान तरीके से देखें. Who's this question directed to? It's a common question. It's open to all. Okay, so maybe I will go first. And I think Diksha did allude to this. I think more and more people with disability have to come out and be seen as using, mainstream facilities, going out to the park for getting first fresh air, maybe doing exercises. Then being seen at the banking services, using the banking services, going out. So when more and more people are seen in positive action, you will certainly find that pity changes to respect. Now, people like me, people like Kiran, people like Diksha who engage with the mainstream, I don't think anybody looks at us with pity. But the point is, there is another section of the community. You don't blame this community. They have not been given, they have not had the access to opportunities. Therefore, they live in dependence, they live in poverty. And therefore, they expect people to, give them things for free. Now that perpetuates a feeling of pity and this one. So I think if you ask me, what is the solution to making the transformation from pity to empathy and respect, it would be providing access to quality education, which not only develops the mind of the person with disability, but also develops skills that help the person to become employable. And that is when I think people will start changing. So I think there's education and skill development, to my mind, are very, very critical. There is no one switch solution to this question.
Government has to invest in education, quality education. It has to be, every district of the country must have education for people with disability. Mainstream schools, it'll be a big ask to ask the government to set up special schools in every district of the country. But if every district of the country can have their schools made inclusive and the curriculum made accessible, technology be used, because we are talking about a digital India. So I think digital technology be used to create a level playing field. I think that's the starting point. And then if parents can send their children to school, educate them, empower them, skill them, and they can either find jobs or they can create jobs by being entrepreneurs. And I think that is the starting point. And till that happens, till that does not happen, there will be a large section of the community who still will be genuine becharas who need help, and they would be seen and they would be the trendsetters with which that actually influences the way people look at people with disability, and this bechara phenomenon will continue. So I think if transformation has to happen, you have to educate and develop and generate skilled people. Thank you, Jyot sir. That was very enlightening. Diksha, do you want to? Would you like to also add to this? Diksha Dinde? Totally second, George sir. I totally agree. Education is must. फिर हम अपने आखिरी सवाल पे जाते हैं, जो हमारा मेन टेक अवे मैसेज क्या होना चाहिए. Everybody who's watching this and everyone who will be watching this later on YouTube, can we maybe can you say me a couple of lines or the last चीज जो आप कहना चाहते हैं, जो main message होनी चाहिए? Anybody? Yeah. I like to say two things. One is, when you see problems or what you think is problems, it is okay to understand and recognize the problem, but I think it's important for us to look for solutions. And I was reminded of this when Diksha talked about the school. The school should have thought about a solution to accommodate Diksha in the school rather than Diksha and her mother having to solve the problem. That's one. Second issue is, I think every person with disability in the country is potentially part of the human resource of this country. The country needs to invest in them rather than looking at just providing for them. Thank you. किरण जी, दीक्षा, आपका आखिरी मैसेज या मेन मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे? मेन टेक अवे. Okay, I guess Kiran sir is not here. मैं सिर्फ यही कहूंगी, instead of looking or focusing on your liabilities, just focus on your assets, just focus on what you have. Life is very beautiful and we all are different, so let's cherish that and never give up again. So this will be my personal message to everyone. And as again Josh sir jo keh rahe, I second that. We should start going out so people will understand our needs, and so it will तभी हम inclusion सही concept implement कर सकेंगे सही मायने में. That's it. Thank you. Okay, so thank you so much, everyone. Thank you, Diksha, Sana Sood. Hi, I'm Sana Hakim. I'm in the state. I'm the vice president. Dr. Swati is the vice president who gave the opening speech, and I'm the president for the MSSC. And this has been nothing short of enlightening. And you were talking about nomenclatures and what's the correct terminology. I think we talk about
abilities, I think ability itself is a very subjective and overrated subject, as well as because people who are considered quote unquote normal may not be that able as well, right? So what is really ability is very subjective. If I had to choose a term, and please correct me if I'm wrong, I would say differently abled. Is that a correct terminology? Or that is not also correct terminology? How would you address that? Just wanted to know your views on that. Not even differently able? No, differently abled is how am I differently abled? Absolutely. Oh, that's there's no that word differently is you're talking about a person who is disabled, a person who does not have a certain functioning sense. Now that, given the ecosystem the way it is, that lack of functioning sense creates trouble in terms of your ability to negotiate the system. Sure. So I don't think I have any extra ability to or different ability to deal with the situation. Yeah. So that's a kind of I don't know how people came up with it's this. Discriminatory, would you say? Would you say it's kind of discriminatory also? I would say that because in a way it is, right? Yeah, differently abled is like Divyang, meaning talking about things that is not real. Right. Yeah. And this was doing the rounds, I also thought of this and I said, okay, let me try and using differently able. And I'm like, why are we even talking about ability? Because it's, like I said, very subjective. Why can't we just address you as George, Diksha, Kiranji? Absolutely. Who have achieved so much in spite of not being in the normal stream of things, so as to speak. That I know a lot of people who would have just put that cow down, and very easy for us to speak and say that, okay, what you've done is very heroic, but it's more like something that you thought that you ought to do and had to do. And for me, for us, all of us, it'll be like Phoenix rising from the ashes story for us. All three of us who've been on your show today, I think we've been just doing, we're all mathematicians because we've been solving problems all the time. Yeah. And finding solutions, Yeah. And to my mind, that's the essence of life. Solve your problems and move on. And if 10,000 people solve the problem, then you'll suddenly find that the ecosystem is friendly because that's created an impact. I think if we start addressing each other by names and treating each other as human, irrespective of gender, your caste, creed, and all of that is very much included in all of that. I think that will help us a lot, getting more inclusive, so as to speak. But thank you so much. This was really insightful, and this gave us and sort of a very small peep in this 1.5 hours which we spent today. Was well spent. Thank you so much for giving that time to us as well, and taking us through not just the hardships, but also how you overcame those and the steps that one needs to take. What we need to take is being mindful of, and some things we don't need to really do or bother even, right? But you don't need to do a sort of things which we tend to overdo sometimes as well. Sure. Right? So I think those kind of discussions were very, very important, and we got some very good insightful questions on the YouTube live as well. So I'm here to just give a vote of thanks to all our panelists. So thank you very, very much. And we will hope to stay in touch with you and have you on board as and when for other programs that we might have, maybe individually, maybe together, who knows. So thank you so much, Sana. Thank you, Diksha. Thank you, Dr. Swati. Thank you, everybody who were at the background of this particular panel discussion. We couldn't have done it without you, and of course, the support and the insights provided today by the panelists themselves. Thank you, everybody. Please stay safe and take good care of yourselves. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you, George. Thank you, Diksha. Thank you. Be safe. Yeah, be safe. Have a good Sunday. Have a good night. Thank you. Bye. Bye.